So these slides are about electromagnetism. So first of all, we need to know what is magnetism and what is electromagnetism. The study of magnetic properties of matter is called magnetism. यानी किसी भी मैटर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, उस स्टडी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म. The study of electric properties of matter and their interrelationship with magnetism is termed as electromagnetism. जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि electro means electricity and magnetism means the magnetic properties of matter, और इनका जो इंटररिलेशनशिप है उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. So here is an MCQ. Electromagnetism is a branch of physics concerned with option A electricity, magnetism, their interrelationship, या D all of the above. So the correct option is D all of the above. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तीन चीजों से कंसर्न होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड देयर इंटररिलेशनशिप. And moving further, the study of electromagnetism formally appears to have been started after the discovery of magnetite, which is Fe2O3, जो कि आयरन की एक ऑक्साइड है, in about 600 BC from Magnesia in modern day Turkey. Magnetic field is always associated with moving charges and not the static ones. यानी हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसके साथ जो फील्ड एसोसिएटेड है उसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जबकि मूविंग चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एडिशनल फील्ड होती है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. So magnetic field is always associated with moving charges and not the static ones. Again we have an MCQ. The difference between a moving and a static charge is that the static charge does not have option A electric field, magnetic field, gravitational field, या D both A and B. Correct option is option B magnetic field. So a moving charge has both an electric and magnetic field, while the static charge has only electric field around it. Next are the characteristics of magnets. So according to what we have in Maxwell's equations, a magnet always has two inseparable poles. The north pole of a bar magnet coincides with the Earth's geographical south pole when suspended and vice versa. इसका मतलब है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि अगर हम एक मैग्नेट लें उसका हमेशा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, जो कि प्रैक्टिकली या फिजिकली इंसेपरेबल होते हैं, यानी हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग नहीं कर सकते. यानी अगर एक मैग्नेट को हम ब्रेक करते हैं तो उसके दोनों पीसीस के पास अपना नॉर्थ पोल और अपना साउथ पोल होगा. और सेकंड पॉइंट का मतलब है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज हम बार मैग्नेट करते हैं, उसको अगर हम सस्पेंड करते हैं तो उसकी जो नॉर्थ पोल है इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ अर्थ, while the south pole of the magnet coincides with the magnetic north pole of the earth. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is north pole and this is the south pole. North pole is the pole of magnet जहाँ से magnetic field lines appear हो रही होती हैं कि वो बाहर निकल रही हैं, and the point where they appear to enter the magnet is termed as south pole. So outside the magnet the field is from north to south, while inside it is from south to north. A bar magnet is subjected to experiments, and the part appearing to be the source of field is painted blue, while that appearing to be the sink is painted red. It is broken exactly into two halves. The red part will behave as option A North Pole, option B South Pole, both North and South poles, and no poles at all. So correct option is option C both North and South poles. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट हैज इनसेपरेबल पोल्स, यानी हम नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं कर सकते. मैग्नेट को जितनी बार मर्जी तोड़ा जाए, हर एक उसका जो फ्रैगमेंट है, पीस है, उसका अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल होता है. So here is the solution. Any magnet, if broken, has its part
each containing their own north and south poles. Again, there's a problem. The difference between electric poles and magnetic poles is that electric poles are inseparable, magnetic poles are inseparable, both are inseparable, both can be separated. The correct option is option B. Magnetic poles are inseparable. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि हम आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स देख सकते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल को हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते. हर फ्रेगमेंट का अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल होता है. The idea that magnetic lines of force don't have a source or a sink forms a postulate of option A. Bernoulli's principle, option B. Joule-Thomson's law, option C. Magnetic domain theory, या option D. Maxwell's equations. The correct option is option D. Maxwell's equations. इसका solution ये है कि मैक्सवेल इक्वेशन के मुताबिक हमने पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक पोल्स इनसेपरेबल होती हैं, और इसी का एक पोस्टुलेट है कि मैग्नेटिक लाइंस कहीं से ओरिजिनेट या कहीं पे टर्मिनेट नहीं करती. दे ऑलवेज फॉर्म अ लूप, जैसे कि पहले मैं स्लाइड में जिक्र कर चुका हूँ कि आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हेल इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. यानी नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है अपेरेंटली, और वहां से कंसेंट्रिक सर्कल्स मूव करती हुई साउथ पे आके अपेरेंटली टर्मिनेट करती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये ज्वाइन कर रही होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. थैंक यू.